इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। ओडिशा पंजाब आन्ध्रप्रदेशेषु चतस्रः नूतनाः सेमीकण्डक्टर परियोजनाः सर्वकारेण अनुमोदिताः। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् चारबागतः वसन्तकुञ्जपर्यन्तं लखनऊ मेट्रो बी प्रथमचरणस्य अनुमोदनम् अभवत्, यस्य अनुमानितव्ययः 1,800,500 कोटिरूप्यकाणि अस्ति। लोकसभायाः अध्यक्षेण ओम बिरला वर्येण उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशस्य यशवन्त वर्मा इत्यस्य विरुद्धम् आरोपस्य अन्वेषणार्थं त्रिसदस्यीय समितिं निर्मितम्। नम्रता बत्रा इत्यनया वुशु क्रीडायां चीनदेशस्य चेङ्डू नगरे विश्वक्रीडायां भारताय प्रथमपदकं प्रदत्तम्। अपि च भारतस्य टेस्ट क्रिकेट दलनायकः शुभमन गिल जुलाई मासस्य आईसीसी पुरुषेषु मासस्य उत्तमक्रीडकत्वेन नामाङ्कितः। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य मुम्बईनगरे खगोलविज्ञानस्य खगोलभौतिकशास्त्रस्य च 18तमम् अन्ताराष्ट्रिय ओलम्पियाड् IOAA इति प्रारब्धम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वस्य वीडियो सन्देशे उक्तवान् यत् 64 देशेभ्यः 300तोऽप्यधिकैः विशिष्टैः जनैः सह मिलित्वा सः प्रसन्नास्ति। प्रतिष्ठितकार्यक्रमाय भारते तेषां स्वागतं च कृतवान्। It is a joy to connect with more than 300 shining stars from 64 countries. I warmly welcome you to India for the 18th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics. ओडिशा पंजाब आंध्र प्रदेशेषु चतस्रः नूतनाः सेमीकण्डक्टर परियोजनाः सर्वकारेण अनुमोदिताः, यस्य अनुमानितव्ययः प्रायः 4,400 कोटिरूप्यकाणां भविष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आध्यक्ष्ये गृहीतस्य मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयस्य विषये वार्ताहरान् ज्ञापयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् सेमीकण्डक्टर इत्यस्य इलेक्ट्रॉनिक्स इति क्षेत्रस्य च कृते सर्वकारः सुदृढं पारिस्थितिकी तंत्रं निर्माति। आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्र में। 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। श्री वैष्णवः अवदत् यत् विगतैकादश वर्षेषु इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुनिर्माणे 6 द्रुतगत्या प्रगतिः अभवत्, निर्याते च 8 वृद्धिः अभवत्। सः अवदत् यत् विगतैकादश वर्षेषु मोबाइल विनिर्माण एकांशानां संख्या 200-300तोऽप्यधिका अभवत्। मन्त्री घोषितवान् यत् आगामि मासस्य 2 दिनात् आरभ्य नवदिल्ल्यां 25-अधिक-2000तमवर्षस्य सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य आयोजनं भविष्यति। सः अवदत् मलेशिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया च सेमिकॉन इंडिया इत्यस्मिन् भागं गृह्णन्ति। श्री वैष्णवः अवदत् यत् चारबागतः वसन्तकुञ्जपर्यन्तं लखनऊ मेट्रो बी प्रथमचरणस्य अनुमोदनम् अभवत्, यस्य अनुमानितव्ययः 1,800,500 कोटिरूप्यकाणि अस्ति। लखनऊ मेट्रो का फेज 1B बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहां पर मेट्रो की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पर फेज 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का। तो इस फेज से काफी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स मेट्रो का लाभ उठा सकेंगे और नागरिकों के लिए बेनिफिट होगा। इस प्रोजेक्ट को 5 साल में कंप्लीट किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री उक्तवान् यत् 700 मेगावाट क्षमतायाः ताटो द्वितीय जल विद्युत परियोजनानां सर्वकारेण स्वीकृतिः प्रदत्ता। सः अवदत् अरुणाचल प्रदेशस्य शियोमी मण्डले एषा परियोजना निर्मिता भविष्यति। एतस्य निर्माणं 6 वर्षेषु भविष्यति।
सः अवदत् यत् एषा परियोजना क्षेत्रे विद्युतः स्थिरं स्रोतं प्रदास्यति, क्षेत्रीयविकासं च संवर्धयिष्यति। सः अवदत् भारतस्य जीवाश्म ईन्धनस्य क्षमता 50% जातम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। लोकसभायाः अध्यक्षेण ओम बिरला वर्येण उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशस्य यशवंत वर्मा इत्यस्य विरुद्धम् आरोपस्य अन्वेषणार्थं त्रिसदस्यीय समितिं निर्मितम्। प्रथमस्य स्थगनस्य अनन्तरं यदा लोकसभायाः उपवेशनम् अपराह्ने 12 आरब्धं तदा अध्यक्षः समित्याः निर्माणस्य घोषणाम् अकरोत्। समितिः यथाशीघ्रं स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति इति च उक्तवान्। मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। अध्यक्षः न्यायमूर्ति वर्मा इत्यस्य निष्कासनस्य आवेदनानि स्वीकृतवान् तथा च सभायै सूचितवान् यत् सः न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा इत्यस्य निष्कासनाय 46 विपक्षपीठयोः संसत्सदस्यानां हस्ताक्षराणि स्वीकृतवान् इति। संस्कृति मन्त्रालयेन अद्य नवदिल्लीनगरे हर घर तिरंगा अभियानस्यान्तर्गतं तिरंगा बाइक रैलीति यात्रा आयोजिता। संस्कृति पर्यटन मन्त्रिणा गजेन्द्र सिंह शेखावतेन, केन्द्रीय मन्त्रिणा किरण रिजिजू इत्यनेन, संजय सेठेन, दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणा रेखा गुप्ता इत्यनया च यात्रायाः नेतृत्वं कृतम्। आयोजने प्रवदन् श्री शेखावतः उक्तवान् यत् तिरंगा राष्ट्रं कथम् एकस्मिन् सूत्रे बध्नाति, अपि च देशस्य वीरभटानां स्मरणं च कारयति। तिरंगा ऐसी ताकत है जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधता है और तिरंगा में स्मरण कराता है उन लाखों बलिदानियों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित किया। तब देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहरा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। विगत दिनद्वये निरन्तरवृष्ट्या उत्तराखण्डस्य विभिन्नेषु भागेषु सामान्य जीवनं बाधितम्। प्रचण्डवृष्ट्या प्रमुखनदीनां स्तरे तीव्रवृद्धिः अभवत्। पर्वतेषु पर्वतीयनद्यः अतिप्रवाहिताः सन्ति। ऋतुविभागेन हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगराणां कृते रेड अलर्ट इति सञ्चेतना प्रसारितास्ति। विभागेन गुरुवासरपर्यन्तं जम्मूकश्मीरे, हिमाचलप्रदेशे च अत्यधिकवृष्टेः रेड अलर्ट रक्तवर्णीय सञ्चेतनापि प्रसारितास्ति। आकाशवाण्या सह विशिष्ट संवादे ऋतुविभागस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः डॉक्टर RK जेनामणिः अवदत् यत् श्वः तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ेषु अत्यधिकवृष्टिः भविष्यति। जम्मूकश्मीरे राजौरी, पूंछ मण्डलयोः अधिकारिभिः अद्य प्रचण्डवृष्ट्या प्रतिकूल ऋतोः च कारणेन सर्वेषां विद्यालयानां पिधानस्य घोषणां कृतवन्तः। अद्य जम्मू राजौरी राष्ट्रिय राजमार्गः अपि भूस्खलनेन अवरुद्धः अस्ति, येन आवागमनं बाधितं जातम्। पञ्जाबराज्ये अद्यापि केषुचित् भागेषु प्रातःकालादेव वर्षा प्रचलति। विशिष्ट सघन पुनरीक्षणस्य विवादस्य मध्ये भारतस्य निर्वाचनायोगेन उक्तं यत् आपत्तिकालस्य 12 दिवसानाम् अनन्तरं बिहारे अस्याः प्रक्रियायाः विषये अद्यावधि कस्यापि राजनैतिकदलेन एकोऽपि आक्षेपः न प्रदत्तः। परञ्च आयोगेन उक्तं यत् सूचीसम्बद्धे मतदातृभ्यः प्रत्यक्षतया 70,913 प्राप्ताः। नम्रता बत्रा इत्यनया वुशु क्रीडायां चीनदेशस्य चेङ्डू नगरे विश्वक्रीडायां भारताय प्रथमपदकं प्रदत्तम्। भारतस्य टेस्ट क्रिकेट दलनायकः शुभमन गिल जुलाई मासस्य ICC पुरुषेषु मासस्य उत्तमक्रीडकत्वेन नामाङ्कितः। एषः गिल इत्यस्य चतुर्थः क्रीडकसम्मानः अस्ति। इति वार्ताः।